हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेरी ट्यूटोरियल बाय अनीशा मंगला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पीरियोडिकल एस्से है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, so please stay tuned till the end. Jot down everything so that you can get to know what are the periodical essay, कब हुए थे, कैसे हुए थे, कौन कौन प्रैक्टिशनर्स हैं, और सारा आपको एक वीडियो में पता लग जाएगा। So please listen to me carefully. Let's start with it. Introduction to periodical essay. राइट 18th सेंचुरी में शुरू हुए थे periodical essay. 18th century is marked by the development of the periodical essays. Right? It was referred to as periodical as it was not published in book form like other types of essay, but it was published in magazine and journals which appeared periodically. ठीक है, periodically appear होते थे, magazines या journal में होते थे, इसलिए इसको periodical बोला जाता है, book नहीं बोला जाता। कब begin हुए थे? 1691 by John Dunton, एथियन गैजेट, उसमें शुरुआत हुई थी पीरियोडिकल एसेज की। ठीक है, अब A.R. Hamphry says, उन्होंने क्या कमेंट किया था? इफ एनी लिटरेरी फॉर्म इज द पर्टिकुलर क्रिएशन एंड पर्टिकुलर मिरर ऑफ द ऑगस्टिन एज, इट इज द पीरियोडिकल एसे। ऑगस्टिन एज का जो ओवरऑल रिफ्लेक्शन है वो हमें कहाँ से पता लगता है? पीरियोडिकल एसेज में, क्योंकि इसमें हर टाइप के इश्यूज को उठाया गया और बताया गया कि क्या चीजें उस टाइम पे प्रेवलेंट थी और क्या गुड थिंग थी और क्या बैड थिंग थी, क्या फॉलीज क्या थी उस टाइम पीरियड की। फोकस मिडिल क्लास, नॉट द एरिस्टोक्रेट क्लास। अब इसको पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा क्यों थी? क्योंकि ये मिडिल क्लास को फोकस करती थी। जो इससे पहले जो बुक लिखी गई थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती थी और वो एरिस्टोक्रेटिक जो क्लासेस होती थी उनके ऊपर फोकस थी, बट ये मिडिल क्लास कॉमन मैन के ऊपर focus थी। One of the main reason of the success of Addison and STEELE was the fact that they kept the taste of middle class. ठीक है, और ये लाइन किसने बोली थी? जेन एच हैक ने बोली थी कि ये इनके पॉपुलैरिटी का रीजन ही यही था कि ये क्या कर रहे थे? टेस्ट ऑफ मिडिल क्लास को फॉलो कर रहे थे। It highlighted the customs, manner and aspiration of common men and women. Now, what are the features? What were the features of this thing? It has an inherent social purpose. Social purpose था, ठीक है, aimed at improving the manners and morals of people. ये क्या चाहते थे कि लोगों का जीने का तरीका, उनकी जो मैनरिज्म है, मोरालिटी है, वो इम्प्रूव हो जाए। They represent society that was a social essay. ऊपर भी लिखा हुआ है, सोसाइटी के ऊपर फोकस करता था। कॉफी हाउसेस, उस टाइम पे जो कॉफी हाउसेस है वो बहुत ही प्रचलित थी और बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड थी, तो उनके ऊपर डिस्कशन है। नेक्स्ट इज थीम्स। थीम्स क्या थे? इट हाईलाइटेड द थीम्स ऑन द फॉल्ट, द फॉलिंग्स ऑफ पीपल। थीम्स वर नॉट सीरियस, इट रादर वर लाइट एंड एंटरटेनिंग, ताकि किसी के जो इमोशंस हैं उनको हर्ट ना हो। Its purpose was to instruct its reader. वो सिर्फ इंस्ट्रक्ट करते थे, उनकी जो फॉलीज है उनको हाईलाइट करते थे, पर किसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे। Purpose. Its purpose was it exposes the false art of life to pull off the disguises of vanity and affection and to recommend a journal simplicity in our dress, our discourse and our behavior. टाइप्स, किस टाइप के पीरियोडिकल ऐसे थे? करेक्टर्स के ऊपर, जो एडिसन एंड गोल्डस्मिथ ने लिखा था। एडिसन ने ये सभी टाइप को फोकस किया था, तो गोल्डस्मिथ जो थे उन्होंने करेक्टर, कंट्री लाइफ जॉनसन, लंदन लाइफ स्टीले एंड गोल्डस्मिथ, फैशन एडिसन, थियोरेटिकल एंड मॉरल ऐसे जॉनसन। तो एडिसन सब में था। ह्यूमर एंड विट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ह्यूमर एंड विट। ठीक है, ह्यूमरस थे जो ये ऐसे थे। इन ऑर्डर टू हाईलाइट द फॉलीज ऑफ पीपल एंड टू करेक्ट देम, दे यूज्ड ह्यूमर एंड विट। लैंग्वेज, किस टाइप की लैंग्वेज यूज की गई थी? ल्यूसिड। ल्यूसिड मीन्स क्लियर, क्लियर लैंग्वेज थी, रिफाइंड थी, पॉलिश थी।
प्रैक्टिशनर, कौन कौन से प्रैक्टिशनर आते हैं? वैसे तो आपको कुछ पता लग ही गया होगा कौन से टाइप के है, उसमें आपको पता लग ही गया कौन कौन प्रैक्टिशनर्स है। द बिग गन्स कौन होते हैं? बड़े लोग। डिफो, स्टील, एडिसन, जॉनसन, गोल्डस्मिथ। व्यूज ऑन पीरियोडिकल एसे, अभी पहले भी हमने काफी व्यूज डिस्कस किए हैं। एक हैजलिट का व्यू क्या है? इट मेक अस फेमिलियर विद द वर्ल्ड ऑफ मेन एंड विमेन, record their actions, assign their motive, exhibit their whims, characterizes their pursuit in all their singular and endless varieties, ridicule their absurdity, exposes their inconsistency, hold the mirror up to the nature and show the very age of body and the time, its form and pressure, take minute of our dresses, air, looks, words, thought and action and shows us what we are and what we are not, play the whole game of human life are over before us, and by making us enlightened spectator of its many-colored scene, enable us, if possible, to become tolerably reasonable agent in the area that which we have to perform art. अब सबसे पहले आ जाएगा डेनियल डीफो के बारे में। उन्होंने सबसे पहले पायनियर किए थे पीरियोडिकल एसे, राइट? The germs of the periodical essays are found in Defoe's review. तो डेनियल डिफो ने रिव्यू लिखा था, which first appeared weekly, then twice, and then thrice a week. इसका एम क्या था? To acquaint the English people with the thoughts of Defoe on international politics and commerce. क्वालिटी क्या थे डिफो के ऐसे की? Are noticeable as its style is lucid and vigorous. Style lucid और vigorous दोनों थे. Other than that, being pioneer in the periodical essay, he influenced STEELE and Spectator. जो सबसे मेन जो periodical essay जो माने जाते हैं वो STEELE और Spectator है, और वो कहां से इन्फ्लुएंस हुए थे? डेफो के रिव्यू से। He wrote the few papers for the STEELE and Spectator. His journal To STEELE is an excellent commentary on contemporary characters and political events. His Draper's Letter, a model of political hangover and a popular argument, rose on unthinking English public and gained him popularity in England. He also contributed to Sheridan's periodical, The Intelligencer. So यहाँ से आप प्लीज लिखते जाइए कि अब इसके कौन से हैं, और शेरिडन का भी अभी यहाँ पर जिक्र आया है तो उसका इंटेलिजेंसर है। अब स्टीले के बारे आ गई। Another important name. He is the original genius and founded the STEELE. अब ये जो इनका पर्पस क्या था STEELE लिखने का? The general purpose of this paper is to express the false art of life, to pull off the disguises of cunning, vanity and affectation, and to recommend general simplicity in address, discourse and our behavior, जो हमने पहले भी बात की है। सर रॉजर, इसके सेंट्रल कैरेक्टर जो था स्पेक्टेटर का वो कौन था? सर रॉजर। उनके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, सर एंड्रयू, विलियम हनीकम्प एंड द स्पेक्टेटर हिमसेल्फ। तो ये आपको जानना जरूरी है कौन कौन से कैरेक्टर हैं। स्पेक्टेटर, हिज टास्क वाज टू रिकवर पीपल फ्रॉम दैट state of vice and folly into which the way age has fallen. Right? He has brought philosophy out of the closet and libraries, schools and colleges to dwell in the clubs and assemblies, at the tea tables and in the coffee houses. अब देखो उससे पहले क्या होता था, जो लोग पढ़ते थे वो कहाँ पढ़ते थे? फिलोसफीज वगैरह कहाँ पढ़ते थे? लाइब्रेरी में, बंद कमरों में, स्कूल्स कॉलेजेस में। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कहाँ पर आ रहे हैं? एसेज क्लब्स और असेंबलीज में या कॉफी हाउसेस में आ रहे हैं, जहाँ पे वो पढ़े जा रहे हैं। एंड इट वॉज पॉपुलर अमंग कॉमन पीपल।
मोरालिटी एंड विट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको आ जाए कि कौन सा ऐसा पीरियोडिकल ऐसे है जिसमें जो एनलिवन मोरालिटी विद विट है एंड टू टेम्पर विट विद मोरालिटी, तो आपको लिखना है स्पेक्टेटर. Joseph Addison and Richard STEELE, they produced 3 publications: STEELE, Spectator, and The Guardian. Dr. Samuel Johnson, he contributed to the Gentleman's Magazine and to his periodicals The Rambler twice, appeared twice. तो इनके सैमुअल जॉनसन के कौन से हो गए? Gentleman's Magazine and The Rambler. These papers were full of deep thoughts and observation. They lacked the elegance of the Spectator. The Rambler re-established the periodical essay when it was in danger of being superseded by the newspaper. उस टाइम पे न्यूज़पेपर का ट्रेंड चलने लगा था, तो इस जो ये Rambler था उसने इसका मार्क किया दोबारा से. Other than that, during 1758 to 60, he contributed papers to Idler and the Universal Chronicle. Oliver Goldsmith, he mainly contributed to Monthly Review. B, इसका फर्स्ट periodical था B, weekly published होता था. It contained papers on variety of subjects. After the closure of B, his paper began to appear under the caption The Citizen of the World in a journal called The Public Ledger. तो Oliver Goldsmith का जो ये important है, The Citizen of the World, right? It was one of the finest collection of essays. After Goldsmith, the periodical essay began to decline. About his contribution to prose, Rickett writes, indeed, his quaint whimsically passing unexpectedly from delicate fancy to elfish merriment, anticipate in many ways the method of Elia and Leigh Hunt. तो अभी ये सीरीज में आ रहे हैं आपके जो ये periodicals हैं, The Tatler, The Spectator. It was founded 1711 to 12, founded by Joseph Addison and STEELE. In 1714, 3 times a week for 6 months. Then this one, this is not important. The Gentleman's Magazine, monthly हुआ था. London Magazine. B, founded by Theophile Budgley. List, the Scots Magazine, the Universal Magazine of Knowledge and Pleasure, the Monthly Review, the Rambler twice weekly, the World every Thursday, the Chronological weekly critical review, London Chronicles, Annual Register, B, Exeter Mercury, the Gospel Magazine, Theological, Town and Country Magazine, Ladies Magazine, Building Magazine, Wesley's Methodist, Armenian, European, A New Review, Annals of Agriculture, the New Town and Country Magazine, Analytical Review, Botanical Magazine, Observer, Sporting Magazine, British Critic, Anthological, Monthly, Tribune. So these are the all lists which are okay. So you can just mark down one more, that Samuel Taylor Coleridge, he founded and edited Watchman. So this is the one you need to know, Watchman. So main I have just given you the highlights of which all were these. So these all were the periodical essays which were published
So please jot it down, make your list. Thank you.